Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Dear students, today we are going to start a new lesson that is reproduction in animals. Now, I will be giving you, first of all, a general introduction of your lesson. Now, you all know what is reproduction. Reproduction is essential for survival of all living organisms. Some animals they lay eggs, while some animals they give birth direct to the young ones, and the young ones they show features of their parents. In this chapter, we will study about the types of reproduction, reproduction in human beings, sex determination, viviparous and oviparous organisms, and gender issues and myths. Now, firstly, we will see what does the term reproduction means. Reproduction वो प्रोसेस है बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे प्रोड्यूस देयर यंग वंस ओके उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं जिससे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे प्रोड्यूस देयर यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड ओके और इट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल of the organism and it is very essential for the continuity of the species on earth. ये जो प्रोसेस है ये इंश्योर करता है दैट स्पीशीज डू नॉट गेट एक्सटेंट ऑन अर्थ. नेक्स्ट इज देर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. फर्स्ट इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन and another is asexual reproduction. Now firstly we will study about what is asexual reproduction and sexual reproduction. In sexual reproduction, this kind of reproduction, there is a fusion of male and female gamete take place and then the young one is produced. But in asexual reproduction, only one parent is involved. There is no fusion of male and female gametes. हमने अभी reaching the age of adolescence वाला chapter read किया था last में. उसमें we have studied that there are male and female gametes. Male gamete is sperm and female gamete is ovum or egg. Okay, and these two are produced in human beings by the separate reproductive organs which are present in individual. Next is asexual reproduction. Only one parent is involved. There is no fusion of male and female gametes. Okay, now the first kind of asexual reproduction is binary fission. Binary fission में सबसे simplest method है ये जिसमें लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं एमीबा पैरामीशियम दे रिप्रोड्यूस बाय दिस काइंड ऑफ method and in this method the parent what happens the parent cell it splits into two organisms okay and the new organism is formed like in amoeba the parent cell divides into two roughly equal sized daughter cell. These daughter cells feed, they grow, they mature and they further divide by binary fission. Means एक parent हो गया and parent cell it gets divided and dividing its nucleus. Then the two cells they get separated and these are daughter amoebas. Two daughter amoeba are formed and this method is known as binary fission. Next type of asexual reproduction is budding. Budding it is shown by hydra. Now hydra में क्या होता है a small bulb like structure या उसको bulge कहते हैं structure it projects out from the body of hydra and the projection जो ये बना ये बड ग्रो करती है and it develops tentacles. And once matured ये break हो जाती है from the parent body and it lead to an independent life. Okay. Next type of reproduction is sexual reproduction. It is a kind of reproduction in which two parents are involved, that is male and female. I told you earlier also. And mostly plants and animals including human being they reproduce by this method only. Okay. And the offspring they inherit they shows the character of both parents. Okay, mother and father दोनों के characters show करता है जो भी offspring बनता है. And most animals
दे शोज दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन. और इनमें मेल एंड फीमेल दे हैव डिस्टिंक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन देम that produced reproductive cells and gametes, जिसको हम gametes कहते हैं या reproductive cell कहते हैं. अब मोस्टली यहाँ पे क्या होता है, जो मेल होता है वो हमने जो लास्ट चैप्टर में पढ़ा था और मैंने इस वीडियो में भी आपको पहले बताया है कि जो मेल इट प्रोड्यूसेस मेल गैमीट्स जिसको हम स्पर्म्स कहते हैं, और फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस करता है जिसको हम ओवा या ओवम भी कह लो सिंगुलर में, और एग कहते हैं. एंड द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दीज गैमीट्स उसको कहते हैं गैमीटोजेनेसिस. और कौन प्रोड्यूस करता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. नेक्स्ट इज इन सम लोअर ऑर्गेनिजम्स मेल एंड फीमेल गैमीट्स जो होते हैं वो एक ही बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं. ओके और उनमें कोई सेपरेट मेल या फीमेल नहीं होता. तो सच ऑर्गेनिजम्स को हम हर्माफ्रोडाइट्स या बाइसेक्सुअल भी कहते हैं. ओके लाइक स्नेल, लीच, स्लग, earthworm, these are all examples of hermaphrodites.